One thing I noticed, the people are doing little things, but they don't earn enough, just a little bit of money, because somebody above him controls him or controls her, takes the money away. Loan sharking is one. Because you don't have any money, somebody lends you money and take away every benefit that you get from your work. So literally poor people became kind of slaves to people who have some money in their pocket. So one of the things I said, why do they have to go to those loan sharks? Why can't I give the money to them? So that thought came that I start giving money to people so that they can do the things on their own and keep the benefits to themselves. Doesn't have to give it away to somebody else. That's what became Grameen Bank, microcredit and all. Everybody said it won't work. It won't work. I said I will try. Because the knowledge says, again I quote, the knowledge says it won't work. And I see, let me try it out. What's the harm trying it out? Just because they say it won't work, why should I accept it? I challenged it. I said, let me try. And I tried and tried, and it worked. And I was very enthusiastic lending money to people from my own pocket. It's not somebody else's money, it's not government money, it's just my own little money that I have in my pocket. An amazing thing. People are so grateful. People are so happy to take this money and paying me back. And I started shouting at the big banks who were saying it cannot be done, it's not banking. I said, what? What I'm doing is the banking. What you are doing is not the banking. Banks are supposed to lend money to people. And you lend money to people who have already have money. I said, that's wrong. You should be lending money to people who don't have money. After that, when you have done that, then you go to the people who have little money or more. You do the reverse. I said, all I'm doing, you made a mess. I'm trying to correct it. They laughed at me. I didn't care. So I kept on expanding. And finally I said, I have to create a little bank to make it happen. So I created a bank called Grameen Bank or Village Bank. And that expanded and expanded. And people ask me, how did you do that? How do you make it happen? I mean, it's like a miracle. It's like a magic. You lend money to people, they pay you back. It looks like a story. It's not real. I said, it's very real. Why don't you go and find out? And they find out it's real. They cannot believe that it can happen. They say, it will very soon disappear because nobody will pay back. I said, maybe, but until then I'll continue. You can't stop me. I continue. They kept saying, what is the magic that you put into it? I said, magic is very simple. Your banking is wrong. You have taught us all the banking formulas, that's all wrong. What I'm doing is the right thing. How do I do that? I said, very simple. I looked at the bank, how they do it. Once I learn how to do it, I just do the opposite. তারা যেভাবে করে, ব্যাংক যেভাবে করে, আমি তার উল্টোটা করি। কাজ হচ্ছে। তারা ধনীর কাছে চায়, বড় লোকের কাছে, they go to the rich, I go to the poor. Very simple. They go to city, I go to remote village. Again opposite. They go to men, I go to women. Opposite. See, you hear about, আপনারা যখন গ্রামীণ ব্যাংকের কথা শুনেন, এটা নিশ্চয়ই খেয়াল করেন, এটা সব মহিলাদের ব্যাপার, আগাগোড়া মহিলা। এখনো বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের 1 কোটিরও বেশি তাদের ক্লায়েন্ট আছে গ্রামীণ ব্যাংকে। 97% 97% of them women. And it works magic. Change the whole society completely. And it creates a lot of problems in doing that. Everybody says it cannot be done, women cannot do anything. I defy this. So defiance of the existing knowledge
became my passion, challenging them. And conventional banks want collateral. জামানত দিতে হয় ব্যাংকের কাছে গেলে, আপনার কিছু থাকলে সেটা জমা দিয়ে তারপরে ব্যাংকের থেকে টাকা নিতে পারবেন। তাহলে গরিব মানুষ জমা দেবে কোথা থেকে? তার তো কিছু নাই। তাহলে কি তার জন্য ব্যাংকিং হবে না? অবশ্যই হবে। জামানতবিহীন ব্যাংকিং হবে, collateral free banking. That's what we did. No collateral. Grameen Bank lends out billions of dollars every year. No collateral. Nobody has to give anything in writing. Earn enough, just a little bit of money, because somebody above him controls him or controls her, takes the money away. Loan sharking is one. Because you don't have any money, somebody lends you money and take away every benefit that you get from your work. So literally poor people became kind of slaves to people who have some money in their pocket. So one of the things I said, why do they have to go to those loan sharks? Why can't I give the money to them? So that thought came that I start giving money to people so that they can do the things on their own and keep the benefits to themselves. Doesn't have to give it away to somebody else. That's what became Grameen Bank, microcredit and all. Everybody said it won't work. It won't work. I said I'll try, because the knowledge says, again I quote, the knowledge says it won't work. And I see, let me try it out. What's the harm trying it out? Just because they say it won't work, why should I accept it? I challenged it. I said, let me try. তারা তো কেউ চাকরি করতে যায়নি, এই টাকা নিয়ে তো চাকরির সন্ধানে যায়নি। তাহলে কি হয়েছে তারা? They became entrepreneurs, businesses. Nobody believed women can run business. Particularly in Bangladesh, women are supposed to stay home, in the back side of the home, so that men cannot see you. We are a Muslim country. You are not supposed to be seen by anybody. That's where we brought money to them, billions of dollars of money, to change the family, change themselves. And everybody is against us. You are destroying the religion. We have to fight with that idea that no, this is what religion says. Dignity to people. And we are only enhancing the dignity of the people. So they became entrepreneurs. I said, if 10 million women can become entrepreneurs, business people, all human beings can become entrepreneurs. So today, I said all education system is wrong, because education system is trying to create job seekers. If you go to school, you have a better chance to get a job. যদি টাকা লেখাপড়া করো, চাকরি পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে ভালো চাকরি পাবে। তা আমার প্রশ্ন হলো, চাকরিটা কি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য দুনিয়াতে? আমি বলছি না, মানুষের জন্ম চাকরি করার জন্য হয় নাই। চাকরি যারা নলেজ তৈরি করেছে তাদের ভুল চিন্তার ফসল। মানুষ হলো উদ্যোক্তা, মানুষ হলো ক্রিয়েটিভ। আমার ভুল শব্দটা, বিষয়টা হলো ক্রিয়েটিভিটি। অল হিউম্যান বিংস আর ক্রিয়েটিভ। আজকে আপনারা নতুন অটোনমাস স্টেট করেছেন, রিজিয়ন করেছেন, আপনাদের সবাই উপদেশ দেবে চাকরি খোঁজো, তাদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করো, না হলে সব খেপে যাবে।
আপনারা চাকরির ব্যবস্থা করবেন না। আপনারা প্রত্যেকটা তরুণকে, প্রত্যেকটা শিশুকে তাকে এন্টারপ্রেনিয়র হওয়ার জন্য প্রস্তুত করুন। এটা খুব সোজা কাজ। আমরা যখন 1 কোটি গরিব মানুষকে উদ্যোক্তা করেছি, সেটার জন্য কোনো স্কুল কলেজ করতে হয় না, শুধু টাকা দিয়েছে। টাকার গন্ধ পেলে মানুষ এন্টারপ্রেনিয়র হয়ে যায়। মানুষের সব বুদ্ধি আছে, মানুষ বড় ক্রিয়েটিভ, বড় সৃজনশীল। That's the essence of the whole human being. Treat them as human beings, not as slave, not as women, not as this. That transforms everybody. And that's the message that we want to bring, to cherish the knowledge that we have. Just one more example from our own experience. There are so many examples. In the late 90s in Bangladesh government decided to give license for setting up telephone company. At that time, telephone was only state-run facility. There's a telephone ministry, there's a telephone department which gives you a telephone and you pay them. Most of the telephone don't work, you complain, nothing happens. Only few telephones in Dhaka, few telephones in Chittagong, that's about it. All Pukata telephone. যখন তারা 96 সালে ঘোষণা করলো তারা নতুন লাইসেন্স দেবে, প্রাইভেট কোম্পানি যদি টেলিফোন কোম্পানি করতে চায়। আমাদের মাথায় হঠাৎ এই বুদ্ধি আসলো, আমরা একটা লাইসেন্সের দরখাস্ত করি না কেন? আমরা তখন গ্রামীণ ব্যাংক, সব বলছে আমরা টেলিফোন দিয়ে কি করবেন? আপনারা গরিব মানুষের জন্য কাজ করেন, গরিব মানুষ টেলিফোন নিয়ে কি করবে? সে তো তাকে ডাকার কেউ নেই, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনি তার টেলিফোন দেবেন? আমি বললাম যে না, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি টেলিফোন দেবো না, আমার মাথায় আরেক বুদ্ধি আছে। দরখাস্ত করলাম, সরকার একই কথা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কেন চাচ্ছেন? আপনি তো গরিবের সঙ্গে করেন, গরিব মেয়েদের সঙ্গে করেন কাজ, গরিব মেয়ে মানুষ টেলিফোন নিয়ে কি করবে? আমি তাদের বোঝালাম, দেখেন তারা তাদের বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কথা বলার জন্য টেলিফোন না, তারা টেলিফোন সার্ভিস বিক্রি করবে। এটা কি ধরনের কথা? What kind of idea is that? I said, very simple idea. They will get the phone from the Grameen phone company, then start selling the telephone service in the village. Village doesn't have a telephone, so everybody will have to come to her to make a phone call, and she'll make a lot of money, and she will change her life just by accessing telephone. Are you crazy? They said. The women in telephone, she never saw a telephone in her life. Of course, she has not seen anything in her life because you never allowed her to see anything. So this is the first time she'll say it. But she doesn't know anything. She's not a literate person. We have no literacy at that time in Bangladesh. People could not read and write. Women couldn't read and write at all. And that's why we want to bring telephone in the hands of the poor women. How they are going to do that? So I tried to explain to the government officials, look, this is very simple. There are only 10 numbers in the whole world, just 10 numbers. If we can convince them, learning about these 10 numbers will bring them money. I said, I can guarantee you they will learn it in 10 minutes because it brings money. And literally exactly that happened. We got the license. We brought the telephone in the villages. We have the network built up to bring telephone in the village, not in the city. We didn't care for the city. We went straight to the village and went to Grameen Bank borrowers. You need a telephone? Here's the telephone. We give you the money, you buy the telephone, and start selling the service. And we call them telephone lady. They're very excited. We are telephone lady. We sell telephone service. Within 4 years, we had 500,000 telephone ladies in the whole of Bangladesh selling telephone service. And it expanded all over the country. And telephone was everywhere. And women who became telephone ladies, they quickly get out of poverty because they are making so much money by just selling telephone service. So it's nothing new, simply you have to think in a different way. Telephone service is nothing new, simply we challenged. Why should it be only for the rich people, only for the business people, only for the government people, not the people at the bottom? So we have created that. When
Grameen Phone, we call it Grameen Phone. Grameen Phone is the largest telephone company in the country. Still now, there are 4 companies. Grameen Phone is the largest company. And that's it. So this is how we have to challenge. Unless we challenge the system will continue to produce the same problems they continue to produce now. Before I conclude, as I mentioned, the mega problem that knowledge has created for us, which will destroy the whole planet. Global warming. Our knowledge is responsible for that. Because we created an economics which is chasing money. Greed-based economy. So you don't care whether you destroy people, you destroy nature, it doesn't matter. As long as you make money, go ahead and do it. In the process, we destroy the whole planet. And global warming is the creation of the economic framework that we made. Unless we redesign the economic framework, we are not getting rid of this global warming, no matter what we do. And the same economic framework has created wealth concentration. সমস্ত সম্পদ অল্প কয়েকজন মানুষের হাতে চলে যায়। আপনি যাই করেন না কেন, যত কিছু করতে চান, সম্পদ চলে যাবে অল্প কয়েকটা মানুষের কাছে। যেহেতু আমাদের সিস্টেমটা বানিয়েছে এভাবে, এটার জন্য একটা সাকিং মেশিন, নিচের থেকে সব সম্পদ নিয়ে যায়, অল্প জনের হাতে হাতে দিয়ে দেয়। আমরা যেভাবে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমটা করেছি, ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের কাজ হলো সম্পদ উপরে চালান দেওয়া। I said that we have to change. এবং এখন আসছে আরেকটা নতুন সমস্যা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমি বারে বারে বলছি, সবাইকে জানাচ্ছি যে এটা এমন এক সমস্যার সৃষ্টি করবে, পৃথিবীর সব মানুষ বেকার হয়ে যাবে, আমরা গার্বেজ হয়ে যাবো, আমাদের এখানে কোনো অধিকার থাকবে না। তা আমি সেটা বলেছি, আমাদের এখন নতুন করে নতুন পৃথিবী করতে হবে। সেই পৃথিবীর নাম দিয়েছি আমি 3 শূন্যের পৃথিবী, 3টা শূন্য। 0 global warming, 0 wealth concentration, and 0 unemployment. And I'm very happy that young people love that idea. I said we have to have a purpose of the whole world. Today we go do business, or you do get a job and have a retirement, and that's not it. Where do we take the society? Which direction we take the society? Where is our destination? You have to define the destination where you have to go. I keep reminding everybody that if you follow the old roads, you will always end up with the old destination, which will be destroying the whole world. I said if you want to create a new world, you have to create new roads. So that's the challenge. Knowledge has to be. Knowledge has to undo itself and redesign so that we can create the world that we want. We design the purpose of the world, then design it from the ground up. That's the purpose. I'm very happy that আপনারা এই আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার সুযোগ হলো। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Thank you very much, all of you. Thank you very much, sir, for your very valuable words. May I request the audience to kindly do a round of applause again. Thank you, sir. A true champion of the poor, staying in their backyard and anchoring for them. Thank you very much, sir, for your years of service, for your years of commitment, for your years of dedication to the cause of the poor. Now, may I request our Honorable Cabinet Minister of Assam, Sri Urkhabara Brahma sir, apologies, we will have awardee of Padma Shri, Sri Sabzi Bhai Dolakia sir, up for the next message. Sir began in a very humble way in Gujarat, and from his humble beginning he inspired
his community and led several successful entrepreneurships, and today sir is one of the leading entrepreneurs of India, and today we are highly privileged to have sir in our midst. And sir is also a philanthropist who has worked considerably in the area of health delivery services. May I request respected Sabzi Bhai Dolakia sir to kindly share a few words. Sir. नमस्कार। आप लोगों को भूख तो लगी होगी, 3 घंटे से बैठे हैं। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी में नॉलेज फेस्टिवल, मैंने भी सर पहली बार सुना नॉलेज फेस्टिवल हो रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन अपने प्रमोद सर जी को कि ये आयोजन किया। ये चाहते हैं कि मेरी कंट्री, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा एरिया नॉलेज मोर ले। जैसे यूनिस सर को भी इधर लाए और मेरे को भी इधर लाए जोश चढ़ाने के लिए। मैं भी आपको ज़्यादा बात तो दोपहर के बाद करने वाला हूँ, लेकिन अब भी आपको स्टार्टर दे दूँ खाली। मैं भी आपकी तरह 12 साल की उम्र में सूरत आया था। मैं भी एक ट्राइबल एरिया में से ही आया था। सारा 12 रुपया टिकट लेके सूरत में आया था और आज मेरा 12,500 करोड़ का एक्सपोर्ट है। अरे आप भी कुछ कर सकते हैं। मैं ये सब बात बाद में करूंगा। मैं 4 स्टैंडर्ड तक ही पढ़ा था, 5वीं छोड़कर चला आया था, क्योंकि हमारे गांव में भी 6 स्टैंडर्ड तक स्कूल नहीं था। और हम 4 भाई हैं बिजनेस में, चारों का टोटल लगाए तो भी ग्रेजुएट नहीं होते हैं। लेकिन हमारे 85 कंट्री में आज एक्सपोर्ट हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है आसानी से सक्सेस हो सकता है। आसाम में सक्सेस होना आसान है। आप एक बार तय कर लेंगे, एक बार नक्की कर लेंगे, हम अपने आप को तैयार कर लेंगे कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तो आसानी से हम सक्सेस हो सकते हैं। कहां के हो डजंट मैटर। पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ है कोई मैटर नहीं है। हिंदू है कि मुसलमान है, ट्राइबल है कि प्रोफेसर है, कोई मेहनत नहीं लगती। हम जेंट्स है या तो वुमन है, कोई मैटर नहीं है। हम नक्की करें तो हम सक्सेस हो सकते हैं। आप इजीली सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा है, आज आपकी सरकार भी अच्छी है, इतने यंगस्टर है, कुछ करने के लिए जज्बा भी है। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है सक्सेस होने की। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ये चाहते हैं कि बोडोलैंड आसाम सक्सेस होए, उसका विकास हुए, क्योंकि इधर जो खजाना है आप लोगों को पता ही नहीं है कि अपने पास कितना खजाना है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे अपनी जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, आपको पता नहीं है ये कितने बिलियन ट्रिलियन खर्चे तो भी ऐसी रिवर हमको मिल नहीं सकती। वो आपके पास है ट्रिलियन सौ पैसा खर्च करके भी। ये एनवायरमेंट के लिए लोग झुम रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक झाड़ नहीं है, हमारे यहाँ जमीन में कोई कस नहीं है। वो गांव में मैं भी इसलिए सूरत चला आया था, क्योंकि गांव में जो अच्छा होता तो मैं इधर तक नहीं पहुंचा होता। गांव छोड़ा इसलिए मैं इधर हूं। गांव में कुछ नहीं था इसलिए मैं सक्सेस हूं। ये आपके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
गांव छोड़ो, या तो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, इसमें से कोई रास्ता नहीं है। मैंने अनुभव किया है, आज भी मैं गांव में काम करता हूं। इतने सक्सेस होने के बाद अभी भी मैं गांव में 18 घंटा आपके एक मजदूर की तरह काम कर रहा हूं और करता हूं। मैंने अभी तक 111 सरोवर बिल्ड किया, बनाया है, 5 एकड़ से ज्यादा और 50 एकड़ तक का सरोवर, जहां एक बूंद पानी नहीं था, वहां पूरी पानी की समस्या ही हल कर दी। इसके लिए मेरे को पद्मश्री मिला है, पैसे से नहीं मिला है। वो आप सब लोग करते हैं, आप सब लोग कर सकते हैं। सर भी जो सर ने किया है, एकदम डाउन में से क्या बांग्लादेश में चमत्कार किया और उसको ये पुरस्कार मिला है, ये सब लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पैसे वाले कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिसके पास बुद्धि है वो कर सकते हैं, वो नहीं। जिसके पास जज्बा है, जिसके पास करने की साहस है, जो चाहते हैं कि मेरे को करने का है, वही कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। और ये नॉलेज फेस्टिवल में से काफी लोग आपको ये नॉलेज शेयर करने के लिए आए हैं और ये इधर फंक्शन होने वाला है। आपका लीडर को यही चाहत है कि मेरे गांव के, मेरे एरिया के, मेरे बोडोलैंड के लोगों को ये नॉलेज मिले और हम सक्सेस होए, ये चाहत है। इसमें से आप कुछ सीख के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे तो आपको फायदा होगा। फंक्शन में आए और चले गए तो कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या हेल्पफुल हूं, दुनिया करे या ना करे, हमको तो कुछ करने का है। ऐसा कोई लक्ष्य लेके हम ये नॉलेज फेस्टिवल में से जाएंगे तो ही कुछ फायदा होगा और तो ही हमारा कल्याण हम खुद ही कर सकते हैं। हमारा कल्याण, हमारी सफलता, हमको सक्सेस कोई नहीं करा सकता हमारे सिवा। हम जब भी चाहते हैं कि मेरे को सक्सेस होने का है, कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो हम चाहते हैं तो रोक सके, लेकिन हम चाहते ही नहीं है। हम अपने आप को कमजोर समझ रहे, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो मोटा हूँ, बोटा हूँ। अपने आप को एक्सप्लेन करते रहते हैं। नहीं होने का अपने पास लिस्ट है, नहीं सक्सेस होने का काफी हमारे पास लिस्ट है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अपने पास सक्सेस होने का काफी लिस्ट बनाओ, नहीं होने की बात ही मत सुनो, नहीं होने वाले के साथ रहो भी मत। नहीं हो सकता है वैसा बोले उसको तो दूर तक छोड़ दो, कोई भी है। मेरी हिस्ट्री में ही ऐसा है, मैं कुछ भी निर्णय लेता हूँ तो हमारे नजदीक के लोग बोले ये नहीं हो सकता, इसको 6 महीने तक मैं नहीं मिलता। ये अपने काम की नोट नहीं है। अपने पास तो ऐसा आदमी होना चाहिए, अपने पास ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए, ऐसा दोस्त होना चाहिए, ऐसा समाज लोग होना चाहिए कि हो सकता है, तू कर सकता है, तू करेगा। ये वातावरण में रहेंगे तो हम करेंगे। इसे नॉलेज, ये जो फेस्टिवल है इसमें से हम कुछ ऐसा, ये शायद बहुत मेहनत किया होगा, पहली बार हो रहा है, इसका मतलब ये नॉट इजी, कितनी इसके पीछे मेहनत लगी होगी। इसमें से हमारा क्या ले, हम इतना स्वार्थी तो बने कि हम खुद क्या ले जा सकते हैं, हम लेके जावे इधर से। इतना स्वार्थी बने कि हम लेके जावे, बिना लेके नहीं जावे। हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा टाइम बेस्ट यूज होना चाहिए। ऐसा कुछ लेके जाएंगे, ऐसा कुछ सोच के जाएंगे तो ये नॉलेज फेस्टिवल आपकी पूरी जर्नी में, आपकी पूरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज लाएगी। आपको कुछ करने का है, ऐसा तो दिखता है, सुबह से आप बैठे हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब यही है कि यंगस्टर है, इधर प्रोफेसर सारे बैठे हैं, सबको कुछ ऐसा है कि मेरे को कुछ देने का है, मेरे को कुछ लेने का। हम लोग भी, सब लोग बोलते हैं कि आप लोग कुछ देने आए हैं, ऐसा नहीं है, हम भी कुछ लेने आए हैं। जो हमसे, हमारे से आप लेंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन हम तो लेके जाएंगे इधर से कुछ। हम तो प्योर व्यापारी है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उपयोग करते हैं। हम इधर से भी कुछ लेके जाएंगे। क्या इधर अच्छी बात क्या है, अच्छा टॉपिक क्या है, हम भी लेके जाएंगे। ऐसा ही हमारा जीवन होना
जहां भी जाए हमारा एक एक मिनट यूज होना चाहिए, एक एक मिनट हम इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा लेके चलेंगे, वरना हमारी लाइफ पूरी वैसे ही चली जाएगी। काफी लोगों की लाइफ क्यों आया था, कैसे आया था, क्या करने आया था, आया और गया, कोई मतलब नहीं है। मैं दोपहर के बाद बताऊंगा कि मैंने जीरो में से क्या किया, मैंने क्यों किया, क्या किया और कैसे किया, वो सब कुछ मैं दोपहर के बाद शेयर करूंगा। ये सेशन जो यंगस्टर है, आज के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो सेशन मत छोड़ना, क्योंकि मेरा 45 साल का एक्सपीरियंस, 12.5 रुपया टिकट था, जेब में कुछ नहीं था, और 45 साल की जर्नी मैं शेयर करने वाला हूँ। आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं, और आप होगे नहीं होगे। मैं भी ऐसा कुछ कहने, क्योंकि मैं भी ऐसा हूँ, मेरा रूल्स है, मैं बेस्ट देता हूँ, जो काम करता हूँ वो भी बेस्ट देता हूँ, समय देता हूँ वो भी बेस्ट देता हूँ, क्योंकि नेचर का नियम है, जब हम बेस्ट देते हैं अपने समाज को, अपने एम्प्लॉय को, अपने, मैं क्यों जाना चाहता हूँ मालूम, मैं बेस्ट देने के लिए। मैं पैसा कमाने के वास्ते मैं नहीं पहचानता मेरे को लोग, मैंने काफी लोगों को बेस्ट नॉलेज दिया है, बेस्ट स्किल दी है, बेस्ट मोटिवेशन किया है, और हम लोग पहचानते हैं। आप शायद मानो गुजरात में कोई आदमी ने अपने एम्प्लॉय को कार दिया, आपको मालूम है, कितने लोगों को मालूम है कि कोई कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को कार दिया था, वो कंपनी हम लोग है। कि हम क्यों देते हैं कार, एक एक, अभी तक हमने 4000 कार एम्प्लॉय को कार या घर या तो ज्वेलरी गिफ्ट किया। हम क्यों देते हैं, हमको बेस्ट चाहिए, नेचर का नियम है, जब हम बेस्ट विचार देंगे तो हमको बेस्ट मिलेंगे, हम बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो हमको बेस्ट पैसा दे तो पैसा मिलेगा, बेस्ट सेवा करें तो हमको ये, मेरा कहने का मतलब है कि हम बेस्ट करने वाले हैं, मैं ये शेयर करने वाला हूँ। आप दोपहर के बाद बराबर मेरा जब भी समय आए सुनना, ये मैं भी कुछ ऐसा दे के जाऊंगा कि लाइफ टाइम याद करेगा, और जो भी जीवन में अप्लाई करेगा वो अमेरिका का है कि अमरेली का है, वो सक्सेस होगा। जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात जीवन में उतारेंगे, वो 100% सक्सेस होगी। यही बात है। मैं भी कुछ नहीं था, मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मेरा सूत्र है, आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। यू अंडरस्टैंड? मैं इंग्लिश पढ़ता है, ये लोगों के साथ रह कर सीख गया, आप लोगों को पढ़े लिखे के साथ, क्योंकि मेरे पास पक्का किया है हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं दोपहर के बाद में ये 5 सूत्रों पे बात करने वाला हूं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हम श्रेष्ठ आदमी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके 5 सूत्र है, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कोई भी काम कर सकता हूं। ये दूसरा है। तीसरा है, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हमेशा अपने साथ है। ये 5 सूत्र पे मैं बात करता हूँ। और चौथा है, आई एम द विनर, फॉरगेटिंग, मैं विन होने वाला हूँ, शंका मत करना, आप भी विन होंगे। और 5वां है, टुडे इज माय न्यू डे। मैंने 5 इसलिए शेयर किया, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। टुडे इज माय न्यू डे, आज हमारा नया जन्म है। नॉलेज फेस्टिवल में से हम नया जन्म लेके जाएंगे, नया कुछ जुस्सा लेके जाएंगे, और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करके मरेंगे, कुछ करके जाएंगे। ये जज्बा लेके आप निकलेंगे तो 100% ये फेस्टिवल का प्रोग्राम सक्सेस होगा। और ये जो काम कर रहे हैं वो लोगों को भी जब रिजल्ट मिलता है तो मोटिवेट होते हैं, तो उसको ये रिजल्ट मिलने से थकान उतर जाती है। मैं चाहता हूँ कि ये फेस्टिवल में से पूरा आसाम में, बोडोलैंड में, ये कम से कम ये एरिया में नया जुस्सा आना चाहिए, और आने वाली 5 साल में दिखना चाहिए कि ये हमारा लीडर नया आया था, उसने क्या किया है। बहुत बड़ी बात वही है कि हमारी केंद्र सरकार की नजर ये आसाम पे है, बोडोलैंड पे है। हमारा कल्याण होने वाला है, हमारा कल्याण हमसे ही होगा, और हम ही उसको रोकेंगे नहीं, हम ही तैयारी करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, ये एरिया सक्सेस होगा, सबका जीवन बदलेगा, सबका सपना साकार होवे,
ऐसी शुभकामना के साथ मेरे को इधर सम्मान किया, आप सबों का, आयोजकों का सही दिल से मैं आभार मानता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, सब लोग सक्सेस हुए, सबके घर में उजाला हुए, ऐसी शुभकामना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर for your very valuable words. We are truly inspired by the words that you placed before us about hard work, about struggle, and for contributing to the society. Thank you very much once again. जोंनिया आलासि सिनायथि दंबावो, बेनि उनाव जोंहा मानाव गेदेर श्री सनाम वांगसुक सर, बिथाङा सेगमलनि फाउन्डार, बिथाङा सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां खामानि मावनानै दिनै मुलुगनाङैनो मुंदांखा जानानै दङ। 3 इडियट मुभिखौबो बिथांनि लाइफ हिस्ट्रिखौ लानानैनो बानायनाय जादों, बिथाङा बुंगोन बिनि उनाव। आरो बिनि उनावहायनो जोंनिया मोनसे भुटाननिफ्राय फैनाय मोसानाय दिन्थिनो थाखाय थाम थिम जानानै दङ। बेनि उनाव जोंजों नुजाथिफैनो हानाय जोंनि बलिउडनि स्टार बिथां बिबेक आनंद ओबेरयजीआ गावनि बिबुंथिखौ लाखिगोन। स' बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो दसे सम आरोबाव बेयाव धैर्य हमनानै थानो खावलायनाय जाबाय। মই আমাৰ এতিয়া সম্বৰ্ধনা কৰিব আছে। মই প্ৰথমতে মাতিছোঁ আমাৰ ডক্টৰ হেমন্ত কলিতা, ডাইৰেক্টৰ অফ চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি, এখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমাৰ অৰ্গেনাইজিং টিমৰ পৰা মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। লগত আছে আমাৰ ডক্টৰ হেমন্ত কুমাৰ নাথ, তেখেতে ৰেজিষ্টাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। ছাৰক তেখেতৰ চিনাকিটো দি পিনি আৰু সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত আছে শ্ৰী দীপেন বড়ো, মাননীয় প্ৰেচিডেণ্ট অল বডো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন, এখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। We have in our midst Mr. Nayan Kumar Barua, respected Executive Director of IOCL. May I request the organizing team to kindly felicitate sir. Thank you. Now we will have the speech from respected Sonam Wangsuk sir, followed by a dance from Bhutan and words of inspiration and motivation from respected Bollywood star Sri Vivek Anand Oberoi-ji. So I will request all of you to kindly be present in the panel. Now, education is one of the thematic area of this International Knowledge Festival. We have several rounds of deliberations on quality education. May I request Sri Sonam Wangsuk sir to kindly share with us his experiences and his view on how quality education can be brought into a society that is recovering from the difficulties of a conflict situation. Sir. बयखौबो आखाइ खबनानै हांख्रायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय sir. नमस्कार सबको। लद्दाख के पहाड़ों से मैं आप सबके लिए बहुत ही अभिनंदन लाया हूं और सबको धन्यवाद, यहाँ आ पाया हूं। मैं यहाँ कुछ बोलने के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ सुनने के लिए आपके जो जश्न इल्म कहेंगे, ज्ञान का जो हम एक मनाएंगे, ज्ञान का समारोह, उसमें भाग लेने के लिए आया था। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा परिकल्पना, एक अच्छी दिशा निर्देशन लगा कि जिस बोडोलैंड में
कुछ दशकों तक युवा पीढ़ी को हथियार लेने के लिए जाना जाता था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार जो कि कलम है वो लेने की तरफ जा रहे हैं, ज्ञान का हथियार लेने की तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह से हम ज्ञान का उल्लास मना रहे हैं, इल्म का जश्न मना रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को मुबारकबाद और बधाई देना चाहता था। सिर्फ ये बात याद दिलाऊं कि ज्ञान जब हम कहते हैं तो आप सिर्फ बड़े शहरों की तरफ ना देखें, पश्चिम की तरफ ना देखें कि हम वहाँ के ज्ञान को सीखें तो ज्ञानी हो जाएंगे, उनके मैथमेटिक्स, उनके केमिस्ट्री, उनके फिज़िक्स के ज्ञान के हम दीवाने हों। तो मैं सिर्फ ये याद दिलाऊंगा कि ज़रा अंतर्मुखी हो के अंदर आपके अपने कितना ज्ञान है वो देखिए। ख़ासकर बोडोलैंड जो कि एक जनजातीय इलाका है, इंडिजिनस लोगों का एक क्षेत्र है, मैं ये कहूँगा कि आप अपने ज्ञान को कहीं अवहेलना न करें, छोटा ना समझें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज अगर भारत दुनिया को कोई ज्ञान दे सकता है, जैसा हम सुनते हैं विश्व गुरु बनेगा, तो वो विश्व गुरु दिल्ली और बंबई के ज्ञान से दुनिया को ज्ञान देने के काबिल नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि भारत का जो मौलिक ज्ञान है, जिसे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स हैं, वो आपके यहाँ जनजातीय लोगों के जीवन में मिश्रित है, निहित है, उसका हम मूल्य समझें और उसे ढूंढें, उसे अपने आप को लाभान्वित करें। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनका ज्ञान आप समझें, जिस तरह से वो यहाँ के हर फूल पत्ते, हर औषधि का समझ रखते हैं और जिस तरह के मानवीय रिश्ते हम जानते हैं मानव में और मानव और प्रकृति में, ये ज्ञान दुनिया को चाहिए। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं, बल्कि इन ज्ञानों पर ज़्यादा ध्यान देने के कारण आज दुनिया की हालत जो बन गई है वो पश्चिम के ज्ञान के दुरुपयोग के कारण बनी है। तो हम पूरब के और उसमें भी जनजातीय लोगों के, वो चाहे असम में बोडोलैंड हो या लद्दाख के पहाड़ों में रहने वाले लोग हों, जो और कुछ नहीं तो वो जानते हैं कि कैसे बहुत ही सादगी भरे जीवन में भी खुश रह सकते हैं। इससे बड़ा ज्ञान दुनिया में कुछ नहीं है। आज दुनिया में लोग लोभ के कारण दुनिया को बिगाड़ने के कागार पर पहुंचा चुके हैं। तो ऐसे में कैसे सादे जीवन से लोग प्रसन्न और खुशहाल रह सकते हैं, वो ज्ञान देने की ज़रूरत है। और वो ज्ञान आप अगर देखें अंदर की तरफ तो आपके अपने संस्कृति से मिलेगी। तो बाहर के ज्ञान के इस चकाचौंध रोशनी में कहीं आपके अंदर का जो सादा ज्ञान है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो ना आप भूल जाएं, यही कहूँगा। मैं बहुत प्रभावित होता हूँ इस बात को कहते हुए भगवान बुद्ध के एक कथन से, जिसमें उन्होंने कहा कि एक मनुष्य के लिए बड़ी बात ये नहीं है कि वो कितने अपने क्या कहेंगे चाहत, इच्छाएं पूरी करता है, बल्कि बड़ी बात ये है कि वो कितने इच्छाएं भस्म करता है, खत्म करता है। इट्स ए ग्रेटर अचीवमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स to conquer a single desire than to fulfill 1000। ये ज्ञान हमें दुनिया को देने की ज़रूरत है और इसके ज्ञानी हैं आप लोग बोडोलैंड में और जंगलों में, नदियों के किनारे, पहाड़ों में रहने वाले जो हमारे जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। आज दुनिया वापस उसी पॉइंट पे आ गई है जहाँ पे हमें फिर से शुरू करने की ज़रूरत है अगर दुनिया का कुछ भविष्य है तो।
यही बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा। वैसे मैं कुछ बोलने के लिए नहीं आया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत बधाई। Thank you very much, sir, for your inspirational words. We are very happy that you are here in our midst, despite your very busy schedule. We believe that we will have more of you in our Bodoland territorial region to inspire our teachers, students, and educational institutions and communities to work in a direction that will solve many issues that affect our systems, institutions, and processes. Thank you, sir, once again. Now, as we have announced, may I request our international dance troupe from Bhutan to kindly present their performance. In the meantime, while our dance troupe is preparing, may I request Dr. Dhruvo Bhattacharya, Honorable Vice Chancellor, Tezpur University, to say a few words on the proposed BTC government and Tezpur University collaboration. Sir. Respected dignitaries on the dais, including Professors Muhammad Yunus, Nobel laureate, vast source of knowledge, Sri Pramod Bodoji, Honorable Chief of BTR, Sri Vishwajit Doimariji, and all other dignitaries on the dais. Esteemed guests, ladies and gentlemen, I am extremely happy to be a part of this inaugural session, and I would like to thank the Chief of BTR, Sri Pramod Bodoji, for giving me this opportunity to stand before you. In fact, every higher educational institution need to reconsider the role of the institution to have a close relationship with the communities. So Tezpur University and its fraternity is very much concerned and motivated to extend this support, its knowledge, innovation to the neighboring institutions, neighboring communities and societies. I am very happy to announce that an MOU is going to be signed between Tezpur University and BTR. Through this MOU, I am very much hopeful that Tezpur University will be able to help BTR to become sustainable with the help of skilled manpower, effective innovation system, and also a dynamic information infrastructure. I am very happy to announce to develop a sustainable India. Thank you very much. Thank you very much, sir. We are really proud and we are honored that the Tezpur University is starting the Bodofa Upendranath Brahmo chair. Once again, I thank you. Now I would like to request our friends from our neighboring country, Bhutan, to kindly present their dance. They represent the BIFA organization, which is Bhutan India Friendship Association. As Bodoland territorial region is right at the foothills of Bhutan, it is, we have a long border shared between Bhutan and
India, and we are at the northernmost part of India. And because of this sharing of borders, we have had cultural, social, economic relationship that has been continuing for ages. And we are extremely happy that you have come to participate in this Bodoland International Knowledge Festival. And we are also grateful that you will be presenting a dance for us. Thank you. This will be followed by a dance performance, Sikri Sikla.
अन्नानै बयबो आखाइ खबनानै होदो. Once again, I convey hearty thanks to the dance group from Bhutan. We are very grateful to you for this wonderful performance. Now, I would like to call upon the Bodo dance group led by Sri Shokrodar Nazari sir, led by Miss Lakshmi, who will be performing the traditional Bodo dance Sikri Sikla. Please. Followed by this, we will have 2-minute declaration by Honorable Vice Chancellor of Assam Agricultural University, Dr. Bidut Chandan Dekar, on possible collaborations between Bodoland Territorial Region and Assam Agricultural University. We will also have announcement by the Honorable VC of Cotton University. Thank you. Please. Cozy
friends. Now I would like to invite Professor Bidyut Chandan Deka, Honorable Vice Chancellor of Assam Agricultural University, to kindly share a few words about the proposed Bodoland Territorial Council, Assam Agricultural University. Namaskar, good afternoon, Professor Lunis and all other dignitaries in the dais, all our friends in the audience gallery. Time is very, very limited. I don't like to take much of the time. It's a very good, important moment for all of us. This international knowledge festival that we are hosting from today till 2nd of March. During this 4-day celebration, we will be discussing at length about various issues pertaining to the Bodoland territorial region. So I, being the Vice Chancellor of Assam Agricultural University, we have been discussing to sign an MOU. An MOU is almost ready. Maybe the last day of this particular festival, we will be signing the MOU, wherein the Assam Agricultural University will facilitate information of the agricultural policy of the Bodoland, number 1. Number 2, we will be helping the BT administration in institutionalizing 3-4 different institutions. The College of Agroforestry and Biodiversity, College of Veterinary Science, and Bodofa Organic and Natural Farming University. So these are some of the issues where we will facilitate the Bodoland Territorial Council. I know Pramod Boro and his entire team is very, very serious, not only bringing peace to this part of the country, but also bringing prosperity through agricultural revolution. That too, as Professor Unis has rightly mentioned about the entrepreneurship development, so as to bring the economic transformation in this part of the country. So I don't like to take much of your time. I promise whatever help we can give for installation of various institutions in this part of the country. I, being a citizen of the BTR region, I am from Baska, so I have a lot of responsibility to create the various institutions so as to create a better environment for overall entrepreneurship development of the entire this part of the state of Assam. Thank you very much. Thank you so much, sir. And now we are moving ahead. And may I request one of the renowned Indian actors, businessmen, philanthropists who have worked not only in Hindi cinema but also in Telugu, Malayalam, Kannada and Tamil films. Starting from Satya to Krish 3, where his great success at the box office, may I request the most esteemed Vivekananda Oberoi to kindly say a few words and address the gathering. भारत माता की, that's like it. सभी मंच पे बैठे हुए महानुभावों को, सभी मिनिस्टर्स, एजुकेशनिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, मेरे भाई प्रमोद बोरो जी, यूनुस साहब जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. I'm a big fan of yours, sir. I have a lot of fans myself, but I'm a huge fan of your work. I love what you've done with Grameen Bank and the kind of women empowerment that you've led. It's an incredible case study. And in my philanthropic endeavors, we look up to people like you. A big hello to Sonam, who himself is got a huge fan following. We love the ideas that you come in with and follow a lot of the concepts that you bring out. I think the focus on growth with harmony is a very interesting one, Sonam. And I'd love to know more from you. And namaskar to everybody else. Speaker साहब, अभी तो आप मेरे लिए स्क्रिप्ट राइटिंग भी शुरू कर रहे हैं, सीन भी बना रहे हैं. मंत्री जी, thank you so much. And to all the beautiful people, मेरे जितने समक्ष बैठे हैं ऑडियंस में, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बोडोलैंड के लोगों को मेरी तरफ से खुलुमबाई. तो
मैं पहली बार बोडोलैंड आया हूँ। मुझे प्रमोद भाई कई महीनों से, पिछले साल से कह रहे हैं आपको आना है आना है आना है। मैंने भी प्रॉमिस किया कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो ट्रिप बन ही नहीं पा रहा था। तो इस बार पहली बार आया हूँ मैं, और सुबह सुबह गुवाहाटी से निकला बाय रोड बोडोलैंड, यहाँ पहुँचा कोकराझार। एंड जैसे हमारी वो फिल्मों में होता है ना, जब हीरो हीरोइन को पहली बार देखता है तो बैकग्राउंड स्कोर चलने लगता है, रोमांस आ जाना लगता है, पूरा लव एट फर्स्ट साइट। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बोडोलैंड से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। आंग बोडोलैंड मिजांग मना, इतना सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह, ब्यूटीफुल ग्रीनरी, हरियाली, इतने प्यारे लोग, इतने स्वीटली मिलते हैं, आपकी देखरेख करते हैं। एक ही दिन में आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया है। आपका म्यूजिक, आपका कल्चर इतना सुंदर है, और इतनी सुंदर सुंदर आपकी लड़कियां, इतनी वो ट्रेडिशनल ड्रेस में, हाँ जैसे ये खड़ी हैं सुंदर सुंदर लड़कियां, क्या अरुणाएं और क्या दोखना और अरुणाएं, ये देख कर बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। स्पीकर साहब बोल रहे थे अभी बैठे बैठे मेरे पास में, उन्होंने गाना दिखाते दिखाते मुझे सीन भी उन्होंने फटाफट से लिख दिया। और सीन भी कैसा कि मेरी पिक्चर में मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस है, कोई है, तो मुझे भगोड़ा भी बना दिया स्पीकर साहब ने, और भाग भाग के यहाँ आ गया मैं बोडोलैंड में छुपने के लिए, और उसके बीच में गाना चल रहा है, और ये सब उनको दिखाना है फिल्म में। लेकिन एक प्रॉब्लम है स्पीकर साहब, प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ये सुंदर सुंदर बोडो लड़कियों को स्क्रीन पे दिखा दिया, ये इतनी सुंदर है कि फिर हीरोइन को कौन देखेगा? तो थैंक यू प्रमोद दा, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। गुजनटन, करेक्ट है? प्रमोद का मतलब संस्कृत में जॉय है, हैप्पीनेस, जो खुशी फैलाने वाला। मैं वाकई आपकी पर्सनल जर्नी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक फिल्म बननी चाहिए। मैं शायद एक्ट नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं आपके जितना हैंडसम नहीं हूँ। प्रमोद जो है, गणेश जी का भी नाम है जो विघ्न हटाते हैं। आज हम नॉलेज फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान, जिसको हम सरस्वती मानते हैं, जहाँ हिंसा है, जहाँ दुर्दशा है लोगों की, जहाँ दुख है, वहाँ पे कभी भी सरस्वती नहीं जाएगी। लक्ष्मी पहुँच जाएगी, ठीक है, पैसा आ जाएगा, वायलेंस के बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक मनी, बट ज्ञान जो है, ज्ञान के लिए शांति बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पढ़ने से पहले बोलते हैं मेडिटेट करो, फोकस करो, मन शांत करो। तो वो जो शांति है वो लाना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी काइंड ऑफ नॉलेज टू ग्रो, फॉर प्रॉस्पेरिटी। एंड गणेश जी को तो कहते हैं विघ्न हटाने वाले, जो सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो प्रमोद भाई, आप एक रूप से अपने नाम को पूरा कर रहे हो यहाँ पे। जिस तरह से आपने बोडोलैंड से सारे विघ्न हटा दिए हैं, सारे प्रॉब्लम्स हटा दिए हैं, अब यहाँ पे ज्ञान की गंगा बहेगी। अब यहाँ पे आपने जिस तरह से अपने यूपीपीएल की फैमिली के साथ में मिलके नॉन वायलेंट पाथ रखा है, एक्सट्रीम वायलेंस के बीच में नॉन वायलेंट पाथ रखा है, दैट आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय। इट्स ट्रूली कमेंडेबल। मुझे लगता है पूरे भारत को आपको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि 20 साल ऑलमोस्ट आपने एक अपने प्यारे बोडोलैंड के लिए जीवन के बिता दिए आपने, और वापस अपने इस बच्चे को, हमारे बोडोलैंड के बच्चों को भारत माता की आपने लपेट में, भारत माता की एम्ब्रेस में आपने वापस ला दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कोई भी काम 20 साल करने के लिए, एक मिशन रखने के लिए बहुत मुश्किल है। मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ, आई हैव बीन एन एक्टर फॉर 20 years। जब मैं प्रमोद दादा के बारे में सोच रहा था, बोडोलैंड के हालातों के बारे में सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि जब मैं स्क्रीन पर सुंदर सुंदर हीरोइंस को रोमांस कर रहा था, लोगों को स्क्रीन पर प्यार करना सिखा रहा था, साथिया में या क्यों हो गया ना में, अलग अलग फिल्मों में, तब आप प्रमोद दा बोडोलैंड में लोगों को प्यार से रहना सिखा रहे थे। जब मैं स्टूडेंट के रोल में शूटिंग कर रहा था, तब आप बोडो स्टूडेंट्स को शूट करने और शूट होने से बचा रहे थे। जब मैं नकली गोलियों से स्क्रीन पर एक्शन कर रहा था, तब आप असली गोलियों के एक्शन के बीच में शांति के लिए, बोडो के लोगों के लिए
यहाँ पे लड़ रहे थे, तो हैट्स ऑफ टू। गांधी जी सिर्फ भारत के करेंसी नोट पर नहीं है, बल्कि अभी भी आप जैसे कुछ अहिंसावादी लोगों के दिल में, जहन में अभी भी हैं। और ये वायलेंस हटाकर जिस तरह से मैंने जब वीडियोस देखे, जब मैंने लोगों के टेस्टिमोनियल्स देखे, आई वाज इमोशनल, क्योंकि आपने जो माँ है उनको बेटे से मिला दिया, बहन को भाई से मिला दिया, जो झगड़ा था वो झगड़े को हटाकर इतनी पीस, प्रॉस्पेरिटी। आज मैं आपको बोलूं, मैं बोडोलैंड आया हूं, द रोड्स वर सो फैंटास्टिक। मुझे लगा कि बोडोलैंड है भाई, इतना सुना है टेररिज्म के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा। इतने मक्खन रोड थे, इतने अच्छे रोड थे कि मुझे कहीं ना कहीं मुंबई वासी होने का थोड़ा सा ईर्ष्या लग रही थी। आई वाज फीलिंग जेलस कि यार हमारे यहाँ भी इतने अच्छे रोड नहीं है जितने आपके यहाँ हो गए हैं बोडोलैंड में। सो फैंटास्टिक दैट यू आर ग्रोइंग सो वेल। एंड यूनुस जी ने भी बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल मेरे हिसाब से एक हिस्टोरिक सक्सेस है कि दुनिया भर से लोग यहाँ आए हैं, नॉलेज के स्टेक होल्डर्स आए हैं, ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, यहाँ की यूथ जो है वो बहुत ग्रो करेगी। यूनुस साहब was speaking of knowledge destroying the planet for commerce, and I was listening to him very carefully, because when a man like him speaks, you listen, you learn. And हमारी संस्कृति में, in our culture, knowledge has importance, ज्ञान बहुत important है, लेकिन knowledge without wisdom is considered a weapon of mass destruction. You can have the knowledge. Oppenheimer had the knowledge to create an atomic bomb, but he killed millions of people, died. The world suffered because of that knowledge. तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ बुद्धि भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान प्योर रहता है, बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है. You can use the ज्ञान for wrong reasons or right reasons. You could use fission and fusion technology to create cheap power for the world, but you can also use it as a weapon of mass destruction. So I think ज्ञान के साथ में बुद्धि बहुत जरूरी है. हम knowledge festival रख रहे हैं, but there should be some degree of focus on how to use that knowledge correctly. अभी सावजी भाई ने खजाने की बात कही. मैं सावजी भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ. आपके बारे में जो मैंने पढ़ा कि 4000 एम्प्लॉइज को आपने गाड़ियाँ, घर, लोन्स, हेल्प करनी है उनकी शादी के लिए, जो सॉफ्ट आपने सपोर्ट किया. आई थिंक दैट्स अमेजिंग. CSR की लोग बात करते हैं 2%, 5%. You have changed the whole dynamic of CSR, corporate social responsibility. Amazing man. I don't know if many of you know this, but not in India but world में शायद नंबर 3 इनकी डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी है, वर्ल्ड में नंबर 3. नंबर 2 भी इनके कजिन ही है, मतलब एक ही परिवार में सब कुछ. बट मुझे ऐसा लगता है कि आप डायमंड किंग हो, लेकिन रियल खजाना ऑफ बोडोलैंड वो यहाँ का कल्चर है, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है. और मोस्ट ऑफ ऑल रियल खजाना ऑफ बोडोलैंड यहाँ का यूथ है. ये यूथ जो टैलेंटेड है, हंग्री है, आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है. बस ये नॉलेज से इस यूथ को हमको दिशा देनी है, स्ट्रेंथन करना है, एक प्लेटफॉर्म देना है, जैसे सोनम भाई करते हैं लद्दाख में. ऐसे यहाँ पे मेंटरशिप क्रिएट करना है, ऐसे यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करनी है. यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है. अब यूथ को दिखाना है कि बोडोलैंड का यूथ दुनिया में अपना नाम कैसे आगे बढ़ाएगा. एंड ये है यहाँ के बोडोलैंड के रियल डायमंड्स, ये है यहाँ का रियल खजाना, मुझे ऐसे लगता है. दुनिया भी स्टार्टअप की है. स्टार्टअप में मैंने बहुत काम किया है. I've built and created 4 startups. All of them have some degree of social impact. They're all for profit, लेकिन उसमें social impact बहुत जरूरी है. स्टार्टअप एक्सेलरेटर चलाता हूँ. इंडिया का पहला स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी मैंने एस्टैब्लिश किया गुजरात में 5 साल पहले, स्वर्णम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. बहुत काम चलता है उसमें. बट रियल थिंग जो मैंने रियलाइज किया है यहाँ की यूथ के लिए, कि स्टार्टअप्स जो हैं इज अबाउट फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी, फाइंडिंग अ सोल्यूशन. किसी की कोई प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो लोग उसके लिए वैल्यू देने के लिए तैयार है, करेंसी देने के लिए तैयार है, वेल्थ देने के लिए तैयार है. जैसे सावजी भाई हैं, वो तो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं डायमंड में, लेकिन स्टार्टअप्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम्स की वजह से पीपल आर विलिंग टू मेक यूनिकॉर्न्स. आपको एक
कंपनी खड़ी करने में, हरे कृष्णा खड़ी करने में शायद 10, 20, 25, 30 साल लग गए। बट स्टार्टअप जो हैं वो आज की तारीख में मल्टी बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं इंडिया के। सो दिस इज द टाइम टू रियलाइज कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है, अगर आपके पास कमिटमेंट है, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, नेक्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया कुड बी फ्रॉम बोडोलैंड। दैट इज द ट्रूथ, दैट इज व्हाट इज पॉसिबल टुडे। एक छोटा सा चुटकुला बताऊंगा मैं आपको, एक जोक शेयर करता हूं। एक दिन हमारे सावजी भाई ट्रेन में बैठे थे राजधानी में, और बाजू में उनके बैठा था ब्रूसली। तो सावजी भाई देख रहे हैं ब्रूसली को, ब्रूसली देख रहा है सावजी भाई को। अब ब्रूसली ने देखा एक मच्छर ट्रेन के अंदर उड़ के आ रहा है कंपार्टमेंट में, बिज़ करके मच्छर ऐसा घूम रहा है। अब सावजी भाई ने देखा कि ब्रूसली ने छपक करके लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस से मच्छर को हाथ में पकड़ लिया ऐसे। एंड सावजी भाई इज नाउ स्टेयरिंग कि भाई ब्रूसली कर क्या रहा है। ब्रूसली ने मच्छर को देखा और ऐसे अप मुंह में डाला और चबाने लग गया। सावजी भाई मेरी तरफ प्योर वेजिटेरियन आदमी, वो देख के शौक में कि क्या हो रहा है यार, ये मच्छर चबा रहा है मेरे सामने। फिर दूसरा मच्छर आया, बिज़ करके ब्रूसली फिर से पकड़ा मच्छर को, वापस मुंह में डाला, वो भी चबाने लग गया। अभी सावजी भाई ने किया स्टार्टअप वाला सिस्टम, सॉल्यूशन, दिमाग लगाया गुजराती बिजनेसमैन का। जैसे ही तीसरा मच्छर देखा, ब्रूसली मूव करे उससे पहले सावजी भाई लपक के पकड़ लिया मच्छर को। अब ब्रूसली देख रहा है ये शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन आदमी मच्छर पकड़ के करेगा क्या। सावजी भाई ब्रूसली के सामने मच्छर रखते हैं और बोलते हैं कितने में खरीदेगा। तो ये अपना स्टार्टअप का माइंडसेट होना चाहिए, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए, तब जाके हम लाइफ में ना बहुत कुछ आगे बढ़ पाएंगे। एक और जोक शेयर करता हूं आपके लिए, मतलब सीखने के लिए, फॉर नथिंग एल्स, हाउ टू थिंक डिफरेंटली, हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक दोस्त था मेरा कॉलेज के दिनों में, उसको एक फियर था, डर था कि रात को जब मैं सोता हूं तो मेरे बिस्तर के नीचे कोई राक्षस छुपा है, वो मुझे बाहर निकल के खा जाएगा। अब रात को उसको नींद नहीं आए, तबीयत खराब हो रही है बेचारे की, तो गया वो साइकाइट्रिस्ट के पास गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला ठीक है तुमको मैं क्योर करूंगा, लेकिन देखो 90 डेज लगेंगे क्योर करने में और 50,000 रुपीज का खर्चा आएगा। तो वो भी टेंशन में कि 50,000 रुपीज का खर्चा, बट पीस ऑफ माइंड चाहिए, सो नहीं पा रहा है बेचारा। तो बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब मैं आता हूं, कल से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अब एक दिन गया नहीं आया, 2 दिन गया नहीं आया, हफ्ता गया, 4 हफ्ता गया, आया ही नहीं। डॉक्टर भी सोच रहा है अच्छा माल बनाने वाला था मैं, 50,000 रुपए मेरा लॉस हो गया, ये क्या चक्कर है। तो एक दिन डॉक्टर उसको मिला, रास्ते में चलते चलते बोला अरे भाई तू आने वाला था, तेरा वो प्रॉब्लम था बिस्तर के नीचे से भूत आएगा पकड़ेगा, तू डरता था, रात को सोता नहीं था, 50,000 में अपनी डील हुई थी, क्यों नहीं आया। तो उसने बोला सर वो तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बोला कैसे सॉल्व हो गया भाई। भाई मेरा एक दोस्त है विवेक, उसने मेरा प्रॉब्लम ना 2,000 रुपए में सॉल्व कर दिया। बोला 2,000 रुपए में सॉल्व कैसे कर दिया तेरा प्रॉब्लम, को डॉक्टर है क्या वो। तो नहीं साहब, उसने क्या किया, मेरे से 2,000 रुपए लिया, 1,000 रुपए कारपेंटर को दिया, मेरे घर आके पलंग के बिस्तर के सारे लेग्स को काट दिया, लेग्स को काट के जमीन पे रख दिया। बोला ले अभी इसके नीचे कोई आ ही नहीं सकता है, सो जा मस्त होके। So it's all about thinking differently, creating solutions like that. हम नॉलेज और विजडम की बात करते हैं, ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बट बुद्धि भी होनी चाहिए उसे सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। अभी आप लोग में से बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं, मेनी ऑफ यू आर मैरिड पीपल। तो जब ज्ञान और बुद्धि की बात आती है तो मैरिड लोगों की ज्ञान और बुद्धि अनुभव की वजह से बहुत आगे रहती है। अब एक आदमी गया अपनी वाइफ को मॉल लेने, शॉपिंग गया, तो वाइफ शॉपिंग करते 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 भूल गई मेरा हस्बैंड भी है, क्योंकि इतना सामान था शॉपिंग देखते देखते, बीच बीच में आती थी, बैग पकड़ाती थी, फिर शॉपिंग करने निकल जाती थी। अब हस्बैंड का टाइम आ गया, उसको निकलना है भाई वापस, वाइफ को मिल नहीं रही है। तो एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी पास में, हस्बैंड गया वो सुंदर कन्या के पास में, बड़ी खूबसूरत लिपस्टिक लगा के, बाल वाल बना के, छोटा सा ड्रेस पहन के खड़ी थी। तो उसके पास गया हस्बैंड और बोला मैडम आप मेरी हेल्प कर देंगे, मेरी बीवी को ढूंढना है मुझे। बोलते हाँ हाँ जरूर हेल्प कर दूंगी, आप बताइए क्या करना है। भाई कुछ नहीं,
यहीं खड़े रह के थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा हंस के, प्यार से मेरे साथ बात कर लीजिए। बोले ऐसे कैसे? बोला आप देखना 10 सेकंड में बीवी अपने आप यहां पहुंच जाएगी मुझे ढूंढते ढूंढते। तो दिस इज नॉलेज एंड विजडम, है ना, इसमें विजडम है। बट जोक्स अपार्ट, आई बिलीव दैट द फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट। हमारे देश का, भारत का एक गोल्डन, एक स्वर्णिम युग चल रहा है। बोडोलैंड मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस। आई माई सेल्फ, मैं जब सोशल इम्पैक्ट फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप्स करता हूँ तो उसमें मेरी एक एडटेक कंपनी है आई स्कॉलर, और आई स्कॉलर में आज हम 200 से ज़्यादा लोकेशंस में ऑलरेडी हैं। बच्चों को IIT, JEE, नीट के ट्रेडिशनल कोर्सेज, UPSC, लॉ, इन सब की हाई लेवल की ट्रेनिंग हम देते हैं। सो फॉर एग्जांपल आज आनंद कुमार है जिनके नाम पे सुपर 30 बनी है फिल्म, तो पीपल लाइक हिम ऑफ दैट कैलिबर, महेश शेट्टी, रियली गुड टीचर्स, ये हमारे साथ में एसोसिएट करते हैं। एंड वी यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू क्रिएट good learning, high quality learning at cheaper prices, even in the most remote areas, helping tribal kids, helping SC/ST kids. उनका ज़्यादा representation होना चाहिए। जब एग्जाम्स आते हैं, नीट के एग्जाम्स आते हैं, IIT JEE के एग्जाम्स आते हैं, तो representation ही कम रहता है। कोटा तो ठीक है, लेकिन जब ट्राई ही नहीं करेंगे बच्चे, अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट्स डिफिकल्ट। लोगों को डर भी लगता है कि हम बच्चों को कहाँ भेजेंगे, दिल्ली, वहाँ पढ़ेंगे, कुछ हो जाएगा तो बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, कोटा फैक्ट्री जाके, यू आर ऑल इन अ मशीन टू लर्न। तो इस तरह से वी आर ट्राइंग टू बी डिसरप्टिव, टू ब्रिंग द बेस्ट टीचर्स थ्रू यू डिजिटली ऑन अ two-way interactive program. In fact, something very exciting that we have done, a lot of VCs are sitting here on this podium, and I must tell them that MIT, which is one of the world's best technical universities, collaborates with us on a program for entrepreneurship, जहाँ हम 8वीं के बच्चों से लेके 12वीं के बच्चों तक एंटरप्रेन्योरशिप के मॉड्यूल्स MIT से सर्टिफाइड प्रोग्राम में टीच कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जॉब लेने वाले बच्चे नहीं हो, बट जॉब क्रिएट करने वाले बच्चे हों। दैट नीड्स टू बी द इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर। आई थिंक नॉलेज शुड बी एबल टू एम्पावर एंड इकोसिस्टम शुड बी एबल टू सपोर्ट। राइट नाउ आई थिंक दिस इज अ गोल्डन एज फॉर इंडिया and a golden age for Bharat. I welcome all you kids, all the youth of Bodoland to come forward and be a stakeholder in this golden future of Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much to our favorite, our shining star, for your most awaited valuable words and for enlightening the gathering. Thank you so much once again, most esteemed Vivek Anand Oberoi sir. Ladies and gentlemen, here is an important announcement. After completion of this session, there will be a meeting among the Vice Chancellors and Nobel Laureate Honorable Professor Muhammad Yunus sir in the Bodoland University Conference Hall. Ladies and gentlemen, now I am moving ahead, and now I would like to take this opportunity and would like to, and may I request Professor Ramesh Chandra Deka, Honorable Vice Chancellor, Cotton University, to say a few words. Sir, please. Namaskar. Distinguished guests in the dais, including Professor Muhammad Yunus, Pramod Boroji, Biswajit Joymanji, and other guests. Invited guests from various institutes of Assam and outside Assam, and my dear student friends. This is a knowledge festival where indigenous knowledge system or Indian knowledge system will be highly discussed. But India is also rich in languages, and particularly in northeastern region we have so many languages, and in the influence of English, many of the languages have been disappeared. So in universities, we must do something so that indigenous languages are preserved and indigenous knowledge are studied and must be studied in indigenous languages. So I, from Cotton University, would like to propose a building in the name of the Boro scientific Pramod Chandra Brahmaji, who was the first person to write the dictionary in Boro languages. So we would like to have a building with like
Pramod Chandra Brahma Bhavan at Kotal University. So with this, I conclude my speech. Thank you very much. Thank you very much, sir. We have Honorable Vice Chancellors of Rajiv Gandhi University and also from Northeastern Hills University. We will shortly be having a meeting of Honorable Nobel Laureate Professor Yunus and the Vice Chancellors in the conference room of the Bodoland University, which will be also attended by Honorable Chief of BTR and educationists. We will now proceed to the concluding remarks to be delivered by Honorable Vice Chancellor of Bodoland University, Professor Laishan Ladu Singh, sir. Sir, please. Nobel laureate Professor Yunus, the chief guest of the first Bodoland International Knowledge Festival, Srijut Biswajit Demari, Honorable Speaker of Government of Assam, Srijut UG Brahma, Cabinet Minister, Government of Assam, Sri Pramod Boroji, Honorable Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council, all the distinguished delegates on the dais, invitees, college principals, professors, my beloved students, and media persons. First, Bodoland International Knowledge Festival 2023 is being conceived, organized, monitored, implemented, and executed solely by our Honorable Chief Executive Member, Sri Pramod Boroji. He believes that everyone's knowledge is of equal value. We all know that knowledge is powerful, and that too when with all the knowledges from all individuals, leaving no one behind, are integrated and put together, that can be made best use for the development of the Bodoland territorial regions. It is with this vision of our Honorable Chief Sri Pramod Boroji, this International Knowledge Festival is being hosted by the Bodoland University, so as to provide a platform to share the knowledges of everyone, starting from the common man to the elites, to the politicians, student bodies, academia, so that we all exchange, share, interact, and get the best fruit out of it, which can be used for the development of the Bodoland territorial regions. This is an exercise on the part of the Bodoland territorial regions, and also equally on the part of the Bodoland University to find all bottlenecks to the planning and implementations for the achievement of 17 goals and 169
targets of the Sustainable Development Goals. It is for these reasons that we have in these international knowledge festivals sessions for the stakeholders aiming to rejuvenate rural economy of BTR, good governance principles and practices and ethics, creating a rock Nirman BTR marching towards quality education, harnessing the potentials of games and sports in the BTR, harnessing opportunities and adapting to challenges in agricultural sectors. In addition to this, we also have panel discussions numbering more than on topics related to livelihood mission of BTR, climate justice and action, indigenous knowledge system integrations in the development of the BTR, sustainable agriculture, and it is a field that we are looking upon the contribution, advice and suggestions from the Assam Agricultural University's child rights and protections, behavioral change and communications, gender empowerment, science and technologies, human rights, peace building mission of the BTR, youth entrepreneurships, encouragement, health and well-being of BTR, intellectual property rights, BTR in the light of the its policies, trade and commerce and investment, and these are all the important major themes and sub-themes on which we shall be deliberating, and that will be put together to converge to the development of the BTR in all sectors for the good of the people, for the benefit of the common man, for the benefit of the student communities, for the benefit of the agriculturalists, laborers, and all sections of the society. I also take this opportunity to thank all our invited delegates who have spared their valuable time to make it possible to be part of the Bodoland International Knowledge Festival. For want of time, I may not be naming each and every one of them, but I must appreciate and thank each individuals, each organizations, each students' bodies, each academia representations for coming to the International Knowledge Festival organized by the BTC and hosted by the Bodoland Universities. With these few words, I once again thank everyone and conclude myself. Thank you very much, sir, 7:20 for your briefing about the 7:25 different thematic areas about the Bodoland International Knowledge Festival. जोंनिया दा प्रग्रामा बे जोबनानै फैथ'बाय दा ओरै ओंखाम जानायनि बेबस्था खालामदों जाय नोंथांमोना ओंखाम जायाखै अननानै ओंखामखौ जानानै फैदो बेवहाय जोंना 4:30निफ्राय प्रग्रामा जाफिनगोन जेरावहाय जोंनि मानव गेदेर आलासिफ्रा फैनानैहाय जोंनि नबेल लरेट सार प्रफेसर मोहम्मद इउनुस दा नोंथांमोनजों आरोबाव खेबसे सावरायबावगोन এতিয়া আমাৰ লাঞ্চ টাইমৰ কাৰণে আমি সমূহ ব্ৰেক লম আমাৰ এতিয়া 2:40 বাজিছে we will have the next session 4টা বজাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম in the meantime আমাৰ honorable vice chancellor sir সকলক Bodoland University conference room meeting to karone after the lunch request korisu aru next program joto 4টা বজাত hobo yate heto hoboloi goi ase
এইটো সেশনৰ নামটো হৈছে ষ্টেক হোল্ডাৰ সেশন উইথ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ বেংকছ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউশ্যনছ এইটো সেশনত আমাৰ গেষ্ট হিচাপে আছে প্ৰফেসৰ মোহাম্মদ ইউনুছ ছাৰে আৰু লগত আছে শ্ৰী ডলাকিয়া ছাৰ চ' আপোনালোকক এইটো সেশনত কোঅপাৰেশ্যনটো দি পিনি শেষ এই মুহূৰ্তলৈকে থাকি পিনি আমাক সহায় সহযোগ কৰাৰ কাৰণে অতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এই সেশনটো সামৰিছোঁ থেংক ইউ